Welcome, dear students. This is our second lecture on the Summerfield quantum free electron theory. In the previous lecture, we talked about one-dimensional solid. तो आज हम इसको generalize करेंगे to a realistic three-dimensional metal. और इसमें concept आएगा Fermi Sphere, Fermi surface, Fermi wave vector, Fermi energy, Fermi velocity. So we will talk about all those concepts in today's lecture. So let us start. So we will take solid in the form of a cuboid. So इसकी length भी L है, इसकी breadth भी L है. This is its length. This is its breadth, and the third dimension, this is its height. So all the three dimensions are same and equal to L. One more thing, inside the metal, अगर आप within the metal आप कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह जाएं, तो you will find potential equal to 0 anywhere inside the metal. But जैसे ही आप surface पे या उससे बाहर देखें, the potential will go up to infinity. Everywhere outside the metal. Outside the metal, the potential is everywhere infinity. Inside the metal, potential is 0. तो इसका मतलब है कि जो हमारा particle है, which is the free electron in our case, the free electrons are trapped inside the metal. तो अगर हम potential का value देखना चाहें, तो if we go from 0 to L in the x direction, this is the origin. So here x will be 0, and we will go up to this point where x will equal to L. So if we go in this direction, the potential will be 0 everywhere. Similarly, if we go along y-axis, so this is the y-axis. So along the y-axis, at the origin, the value of y is 0, and at this point, the value of y is L. So if we go from y is equal to 0 to y is equal to L, the potential is 0. And same is the case along the third dimension, the z direction. तो बाकी जो भी स्पेस है वहां पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है. तो कहने का मतलब ये है कि दैट इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच ट्रैप्ड इनसाइड द थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल वेक्टर. तो वी शैल कंस्ट्रक्ट श्रोडिंगर्स इक्वेशन फॉर दिस. This is the Schrodinger's time independent equation, जहां पे हम Hamiltonian operator apply करते हैं एक wave function पे, which will be our eigenstate, the allowed states for electron. So it will give us the same eigenstate back with a number in the coefficient, and that number is called eigenvalue, or it is the allowed values of energies. So first we have to see what about this Hamiltonian, because Hamiltonian operator will be the sum of operators for kinetic energy. This is the operator for kinetic energy, and this is the operator for potential energy. Since inside the metal potential energy is 0, so Hamiltonian is wholly and solely only kinetic. And kinetic energy operator is square of momentum operator divided by twice mass. This is the expression for momentum operator in 3 dimensions minus IH bar delta. तो जब इसकी हम स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस का स्क्वायर will be positive, but I का स्क्वायर will be -1, H bar स्क्वायर that is here, और डिनोमिनेटर में 2m है, that is here, and then there is del square. Del square is double differentiation with respect to the spatial coordinates. So del square is this much.
partial square by partial x square. This is the double differentiation with respect to the special coordinate x. Then plus partial square by partial y square. This is double differentiation with respect to the coordinate y. And plus partial square by partial z square. This is the double differentiation with respect to the special coordinate z. So we will substitute this in our equation A, that is the Schrodinger's time independent equation. तो इसमें हम इसको substitute करेंगे. तो यहाँ पे जो wave function है, we will denote it with psi k of r. R because it will depend on the three-dimensional position vector, and k stands for the wave vector. तो यहाँ पे we will talk about the wave function in terms of k, the wave vector. तो ये जो माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m है, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो वी विल गेट माइनस ट्वाइस m बाई एच बार स्क्वायर ई के, और इसके साथ होगा द वेव फंक्शन साई के ऑफ आर. तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ ये बचेगा. तो फिर हम इस राइट हैंड साइड पे जो है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो इसका जो ये साइन है ये प्लस बनेगा, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 बचेगा. सो दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1, जिसको अब हमने सॉल्व करना है. सो दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव टू सॉल्व. Well, since the electrons are confined to a cube, जिसका हर कोई side L है, so that means wave function जो है, wave function will be in the form of a standing wave, because it will not be progressive wave. It is very much trapped, so it is in the form of a standing wave. और standing wave के लिए हमारे पास ये expression है for 3 dimensions. C is some constant जिसको हम नॉर्मलाइजेशन से इवॉल्वेट कर सकते हैं, एंड इसको हमने सॉल्यूशन को एनालॉगसली लिखा है. दिस इज फॉर एक्स डायमेंशन, दिस इज फॉर वाई डायमेंशन, एंड दिस इज फॉर जेड डायमेंशन. हियर द nx, ny and nz, they are some integers. Now the wave function has to be periodic in x, y and z, and the period is L. तो ये जो equation number 2 में conditions हैं, that the wave function at x plus L should be very much same, which was psi at x. Similarly, the wave function at y plus L should be the wave function at y, and wave function at z plus L should be the wave function at z. So this condition is called Born-Karman boundary conditions. तो जब हम इन boundary conditions को apply करते हैं, तो we get this equation for the wave function, 1 by under root of v, where this v is volume of the solid. It equals L cube, length into breadth into height. And exponential function के अंदर है kx into x, ky into y, kz into z. तो अगर हम dot product लें vector k with the position vector r, तो हमें यही kxx plus kyy plus kzz मिलेगा. So that means we get solution in the form of equation number 3. अच्छा, जब पीरियोडिक कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं, तो हमें वेव वेक्टर के लिए एक्सप्रेशंस मिलती हैं, जैसे कि हमने कल भी देखा. तो एनालॉगसली हम के वाई और के जेड के लिए भी लिखेंगे. तो वी गेट एक्सप्रेशंस फॉर द वेव नंबर अलोंग एक्स, वेव नंबर अलोंग वाई, वेव नंबर अलोंग जेड. तो कोई भी कंपोनेंट ऑफ के जो है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2n पाई बाई l.
यानी n is an integer, so k कोई भी component हो, चाहे x, चाहे y, चाहे z component of k, it can be either 0 or plus minus 2 by L or plus minus 4 pi by L and so on. तो अगर इनको हम k स्पेस में प्लॉट करें तो हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट विल बी 2 पाई बाई एल। इसी तरह अगर हम अलोंग y डायरेक्शन देखें तो देयर विल बी अगेन द डिस्टेंस 2 पाई बाई एल, और अगर अलोंग z डायरेक्शन देखें तो वहां पर भी 2 पाई बाई एल होगी। सो दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू वन पॉइंट हम इन k स्पेस वी कैन ड्रॉ ए क्यूब जिसकी लेंथ भी होगी 2 पाई बाई एल, जिसकी ब्रेड्थ भी होगी 2 पाई बाई एल, और जिसकी तीसरी डायमेंशन भी होगी 2 पाई बाई एल। सो दैट मीन्स वॉल्यूम असाइन्ड टू ईच पॉइंट इन के स्पेस विल बी 2 पाई बाई एल क्यूब्ड। तो एक तो किसी भी कंपोनेंट ऑफ के के साथ एसोसिएट है एक नंबर n with the relation that any component of k, whether kx, whether ky, whether kz, will be equal to 2n pi by l. और एक और क्वांटम नंबर है एसोसिएट, दैट इज द सुपिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस 1/2. इट स्टैंड्स फॉर सुपिन अप एंड सुपिन डाउन orientation. So when we will substitute equation number 3 in equation number 1, तो हमें यानी कि जो इक्वेशन नंबर 3 हमें मिली थी वेव फंक्शन साई ऑफ के आर, ये हमें मिली थी 1/√v into exponential I k dot r. This is the wave function which is our equation number 3. जब इसको हम श्रोडिंगर्स इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलती है। इक्वेशन नंबर 5, ek is expression for energy in state designated with wave vector k, जिसके कंपोनेंट्स हैं kx, ky, kz इन 3 डायमेंशंस। तो हमें एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन मिलती है h बार स्क्वायर बाई 2m इंटू kx स्क्वायर ky स्क्वायर kz स्क्वायर का सम। तो ये जो सम है kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर, वी विल पुट दिस इक्वल टू k स्क्वायर। So this is the expression for energy. So the energy, the allowed values of energies for free electrons in a 3-dimensional metal is given by this expression, h bar square k square by 2m. If we plot a graph between energy and wave vector, so you can see that the energy ek is proportional to the square of wave vector. So the graph will be a parabola as shown in this figure. Well, linear momentum operator is minus IH bar delta. इसको हम operate करेंगे on the wave function. So we will operate it minus IH bar delta. So this delta will operate on the wave function 1/√v. It will get out. इसके आगे है minus IH bar. Now delta means differentiation with respect to r. So that means एक तो हमें exponential function मिलता है वापस. Exponential function की differentiation is again it is original value into the differentiation of this argument of exponential function. When we will differentiate it with delta, 3-dimensional differentiation with respect to r, so we will get ik. Now I and I is -1 because I square is -1, that will cancel this minus, and we will get h bar k into the original wave function, which is psi k of r. So that means this is the eigenvalue for momentum.
So this is the value for electron momentum. So momentum of a free electron is h bar k. This is the momentum of a free electron. इसी तरह अगर हम velocity देखना चाहें, the velocity will be given by momentum divided by mass. So that will be h bar k divided by mass. So this is expression for velocity of a free electron. तो अगर हम ये k स्पेस में kx, ky, kz के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, so along x axis we will plot the values of kx, along y axis we will plot the values of ky, and along z axis we will plot the values of kz. तो हमें एक स्फीयर मिलेगा because we have an equation that k square equals kx square plus ky square plus kz square. So this is an equation of a sphere with radius k. तो अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहें तो k के साथ हम एक सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे f. F denotes for Fermi. So k is the maximum value of wave vector for a free electron. तो यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे Fermi sphere. Fermi sphere is a sphere in k space कि जिसके अंदर जो भी एनर्जी स्टेट है that is filled at absolute zero in ground state. तो द मैक्सिमम एनर्जी जो कि हमने कल भी बात की है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो, उसको हम फर्मी एनर्जी कहते हैं. तो फर्मी स्फीयर इज अ स्फीयर इन के स्पेस सच दैट कि उसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, ऑल द वैल्यूज ऑफ के, दोज वैल्यूज ऑफ के विल कॉरस्पॉन्ड टू एनर्जी स्टेट्स दैट आर फिल्ड. और इसके आउटसाइड जो वैल्यूज ऑफ के हैं, दे विल बी एम्प्टी. इनसाइड जो के के वैल्यूज हैं, दे विल कॉरस्पॉन्ड टू एनर्जी स्टेट्स व्हिच आर फिल्ड एट एब्सोल्यूट जीरो. और इस फर्मी स्फीयर के बाहर जो आपको के वैल्यूज मिलेंगे, दे विल कॉरस्पॉन्ड टू एनर्जी स्टेट्स व्हिच आर एम्प्टी एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि एट जीरो केल्विन. So electrons with the maximum energy will have the maximum value of k, जिसको हम kf से denote करते हैं. तो obviously that will be the maximum value of k, and those maximum value of k will lie on the surface of this sphere. तो नेक्स्ट जो टर्म हम डिफाइन करते हैं, दैट इज फर्मी सरफेस. फर्मी सरफेस इज द सरफेस ऑफ फर्मी स्फीयर. इट इज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट एनर्जी. कांस्टेंट एनर्जी, व्हाई? बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज कांस्टेंट, द रेडियस इज कांस्टेंट. So the energy corresponding to surface of the sphere will be h bar square k square by 2m. This is the general expression for energy. लेकिन जब हम surface की बात करेंगे तो वहां पे k का value is the maximum kf. So that means this is a maximum value but constant value. So Fermi surface is the surface of constant energy EF in k space, जिसमें कि सारे states occupied हैं by the valence electrons, और जो भी बाहर के states हैं, they are all empty. Fermi wave vector. तो
origin से लेके maximum value of wave vector which is up to the surface kf, इसको हम कहते हैं Fermi wave vector. The Fermi wave vector is the radius of Fermi sphere. Next, we shall talk about Fermi momentum. Since general expression for momentum is P, and that is given by h bar k, लेकिन अगर हम k का value maximum रखें, which corresponds to the Fermi surface, then this momentum becomes Fermi momentum. So Fermi momentum is the maximum possible value of momentum of free electrons in metals at absolute zero. तो फर्मी एनर्जी, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर यहाँ पे F ना हो तो देन दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी. तो इसमें हम अगर हम वेव वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू दें F, then this will correspond to maximum energy of free electrons, that is called Fermi energy. So equation number 7 gives expression for Fermi energy. Similarly, since we suppose that the energy inside metal is wholly and solely kinetic, so that means this energy is wholly and solely kinetic. So kinetic energy के लिए हम expression लिख सकते हैं, it is 1/2 mv square. Now since this energy is maximum, तो हम यहाँ वेलोसिटी की जगह भी मैक्सिमम वेलोसिटी कहेंगे, एंड दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड फर्मी वेलोसिटी. So Fermi velocity is the maximum velocity that free electrons can have in a metal, and this corresponds to obviously Fermi surface. The velocity of electrons whose energy state lies on the Fermi surface is called Fermi velocity, and that Fermi velocity is related to Fermi energy by EF equals 1/2 mvf square. This is the relation between Fermi energy and Fermi velocity. अच्छा, अगर हम इस Fermi sphere का वॉल्यूम देखना चाहें, that is obviously the volume is given by 4/3 pi into radius का cube. The radius is Fermi wave vector kf, इसका cube. So that is the volume of this Fermi sphere. Okay, अगर हम ऑर्बिटल्स को या इलेक्ट्रॉन के आइगन स्टेट्स को के स्पेस में पॉइंट से डिनोट करें, तो इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अलोंग के एक्स दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगी 2π/L. इसी तरह along ky the distance between 2 points will be 2π/L, and along z direction the distance between 2 points will be 2π/L. So that means कि volume that corresponds or occupied by one point or one state, volume occupied by one energy state, जिसको हम ऑर्बिटल भी कहेंगे, चूंकि लेंथ भी है 2π/L, ब्रेडथ भी है 2π/L, और तीसरा डायमेंशन भी है 2π/L. So this is the volume occupied by one energy state of electron or one orbital. So the total number of orbitals हमें कैसे मिलेगा? हम देखेंगे कि अवेलेबल वॉल्यूम कितना है. The total number of orbitals, which is actually n, because n is the total number of electrons. तो हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एक एनर्जी स्टेट होगी, अपना ऑर्बिटल होगा. That will be equal to available volume in the k space, available volume in k space, और इसको हम डिवाइड करेंगे कि एक ऑर्बिटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड
by each orbital. So n will be equal to अवेलेबल वॉल्यूम कितना है k स्पेस में, और इसको हम डिवाइड करेंगे कि हमारा एक पॉइंट या एक ऑर्बिटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. So 4/3 pi kf cube, this is the available volume in k space, and this 2 pi by L का cube, that is volume occupied by one orbital. तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये फैक्टर 2 कहाँ से आया. जब हम इसमें फर्मी वेक्टर अप्लाई करेंगे तो दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू ओनली वन क्वांटम नंबर, बट the electron has two quantum numbers. One is n, which gives energy, and another is the spin quantum number, which has got either of the two value. So for each value of n or each value of k, we have got two values of ms, because the electron spin can be either up +1/2 or minus, that is downwards. That's why the factor 2 is here. तो 2 is here. इस डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमें इसका रेसिप्रोकल मिलेगा, L क्यूब डिवाइडेड बाई 2 पाई क्यूब इंटू 4/3 पाई kf क्यूब. तो दिस L क्यूब इज वॉल्यूम. सो इन द नेक्स्ट सेटअप हम L क्यूब की जगह वॉल्यूम लिखेंगे. वन मोर थिंग, ये जो डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब है दैट मीन्स 8, और न्यूमरेटर में 4 भी है और 2 भी है, तो ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा. एंड वन मोर थिंग, डिनोमिनेटर में हमें पाई का क्यूब है, तो न्यूमरेटर में 1 पाई है, तो इसका एक पावर कैंसिल होके स्क्वायर बनेगा. सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट n will be given by volume divided by 3 pi square into kf cube. So this is one expression for the number of electrons in the metal, or equivalently the number of orbitals. तो अगर हम यहाँ से kf के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो पहले तो हम यहाँ से kf क्यूब के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. kf cube को multiply है v, it will get divided to n, so it will become n by v. और kf cube के डिवीजन में है 3 pi square, so it will become 3 pi square here. फिर चूंकि क्यूब है, so we will take cube root on both sides, यानी जो पावर है वो हम यहाँ पर भी 1/3 लेंगे, तो यहाँ पर भी 1/3. तो यहाँ पर this 3 and this 3 will go, so we will get kf, which is here. So we get kf equals 3 pi square n by v whole power 1/3. So this is the expression for Fermi vector. तो इसको हम एनर्जी की एक्सप्रेशन में यूज करेंगे. This is the expression for Fermi vector, and this is our Fermi energy. तो इसमें हम ये फर्मी वेक्टर जो है इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो we will get this expression. Equation number 11 gives expression for Fermi energy. And since this total number of free electrons divided by volume of the metal, इसको हम small n से denote करते हैं. This gives us free electron density. That is the total number of free electrons per unit volume. तो इसको हम n by v को हम small n से भी denote कर सकते हैं. So equation 11 gives us the expression for Fermi energy in terms of the carrier concentration. The carrier concentration, that is in it relates Fermi energy with the free electron density. तो अगर हम equation number 11 को लिखें, for all energies from 0
अप टू द फर्मी एनर्जी, उन सबको हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन. So this is general expression for energy. Now next we shall go to density of states. Now this is the expression for energy. यहाँ से हम n के लिए expression निकालेंगे. तो सबसे पहले तो हमें 3 pi square n by v, इसका पावर है 2/3. This will become 2m by h bar square into e, right? In the next step, इसका पावर 2/3 है तो हम इसका पावर 3/2 लेंगे. तो यहाँ पर भी पावर हमें 3/2 लेना पड़ेगा. This 2 will cancel this 2, this 3 will cancel this 3. So we get 3 pi square n by v equals 2m by h bar square e. तो e का भी हम पावर रखेंगे 3/2 और जो 2m by h स्क्वायर है इसका भी पावर रखेंगे 3/2. तो यहां से हम n के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. We get expression for n is equal to v by n 3 pi square into 2m by h bar square whole raised to power 3/2 into energy 3/2. तो इसको हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो हमें n के लिए ये एक्सप्रेशन मिलती है. We get n is equal to v by 3 pi square और जो 2 pi by h bar square e है इसका हमने पावर इकट्ठे रखा है 3/2. So this is what we will get, the number of orbitals, the number of energy states when the energy is E. तो यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे जो कि हमने इससे पहले भी बहुत बार किया है. डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हम किसी एनर्जी के वैल्यू पे लेते हैं. सपोजिंग व्हेन द एनर्जी इज E, the number of orbitals or the number of energy states is n. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, we add a small increment to energy so that the energy becomes E plus dE. So this is an infinite simul energy in interval dE. तो हम देखते हैं कि उस वक्त नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स कितना है. सपोज दैट बिकम्स n plus dn. सो दैट मीन्स कि इन द इंटरवल एनर्जी इंटरवल dE द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स कंटेन्ड इज dn. तो इन दोनों का हम रेशो लेते हैं. वी टेक रेशो dn by dE, the number of energy states per unit energy interval, and this is what we define as the density of states. और इसको हम डिनोट करेंगे G of E. So G of E is the density of states, number of energy states per unit energy interval. तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 13. So density of states is the number of energy states or electron orbitals available per unit energy range at some particular value of energy E. तो अगर हम density of states which gives me number of energy states per unit energy interval, तो अगर हम इसको energy interval multiply करें तो per unit interval खत्म हो जाएगा. You will get number of energy states, number of energy states but in the small energy interval d. That is given by this factor G of E into dE. So जब हम इक्वेशन नंबर 13 को डिफरेंशिएट करेंगे तो we will get dn
इज इक्वल टू v बाई 3 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इंटू 2m बाई h बार स्क्वायर जिसका होल पावर है 3/2, वो भी कॉन्स्टेंट है। फिर e रेज टू पावर 3/2 है, उसकी डिफरेंशिएशन आएगी 3/2 e, और 3/2 को माइनस करेंगे 1 तो बचेगा 1/2 इंटू डी ई। सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन। तो यहां से हम डी एन बाई डी ई के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे विच विल बी आवर जी ऑफ ई। तो 3 and 3 कैंसल्स, तो बाकी जो बचता है दैट इज आवर density of states. So obviously density of states is proportional to square root of energy. So this is the graph of density of states versus energy. Since this is proportional to square root of energy, so you will get this graph. Again, this is our equation number 13. So n is given by this expression. अगर हम दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग लें तो we will get log to the base e of n is equal to natural log, that is log to the base e of this whole fraction, which is v by 3 pi square into 2m by h bar square whole power 3/2 into हम एनर्जी का पावर अलग लिखेंगे e raised to power 3/2. Now this whole thing is a constant. We will use here an expression that log of x into y equals log of x plus log of y. तो इसको हम x मानेंगे एंड e raised to power 3/2 इसको हम y मानेंगे। तो we will get log to the base e of this whole thing which is a constant. So इसको मैं लिखूंगा log of c. c stands for this whole constant plus log of e raised to power 3/2. नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है लॉग की, दैट इफ वी हैव लॉग m raised to power n, तो we can write this as n into log of m. ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, e का पावर 3/2 है तो ये आगे आएगा, दिस विल बिकम प्लस 3/2 log of e, और इसके आगे है log of c. So this will be equal to the natural log of the number of energy orbitals. So this is what we will get. तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, log की डिफरेंशिएशन होती है, it will become dn divided by n is equal to constant, it will become 0 plus 3/2 into de divided by e, because log की डिफरेंशिएशन है 1 by n, या रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन इनटू इट इज डिफरेंशियल। सो अगर हम इस 0 को कैंसिल करें तो यहां से हमें एक्सप्रेशन मिलेगी dn by de will be equal to 3n by 2e, and this is again our density of states. तो density of state के लिए ये एक्सप्रेशन भी हमें मिलती है। So this is again another expression for density of states. Welcome dear students. This is our third lecture on the quantum free electron theory of metals. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फर्मी एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन है,
since electrons are fermions, so we will apply Fermi Dirac statistics, and we shall also see and derive an expression for average electron energy at absolute zero. So let us start. चूंकि electrons fermions हैं, and if this is the energy level diagram, these are the possible values of energy for the given system, and this is the direction of increasing energy. तो हर किसी एनर्जी लेवल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं. So two electrons can have same energy. One will have up spin, another have spin down. तो इसी तरह दूसरी एनर्जी लेवल उसमें भी दो ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं. And since there are large number of free electrons in a metal, around 10 raised to power of the order of 10 raised to power 9 free electrons per cubic meter. This is the order of magnitude for free electron density in a metal. So there are large number of free electrons in a given sample of metal. So obviously there will be large number of energy levels जिनमें इन electrons को accommodate करना होगा. तो हम टेम्परेचर रखेंगे मेटल का 0 केल्विन, और हम देखेंगे कि उस वक्त टॉप मोस्ट फिल्ड एनर्जी लेवल कौन सी है. सपोजिंग दिस इज द टॉप मोस्ट फिल्ड एनर्जी लेवल, तो दिस लेवल इज कॉल्ड फर्मी लेवल. तो कॉन्सिक्वेंटली एट एब्सोल्यूट जीरो जो हमें टॉप मोस्ट फिल्ड एनर्जी लेवल मिलती है, वी कॉल दैट फर्मी लेवल. तो उससे नीचे जो भी ये लेवल्स हैं, दे आर ऑल फिल्ड, और उससे ऊपर जो ये सारी की सारी लेवल्स हैं, दे आर ऑल एम्प्टी. और अगर हम यहाँ पे फर्मी लेवल की एनर्जी देखें, this will be the energy of Fermi level. We denote that EF. So EF is the maximum value of energy that an electron can have in metal. और चूंकि energy of an electron इसके दो contributions हो सकते हैं, kinetic plus potential. और quantum free electron theory में हमने देखा कि there is zero potential inside the metal, so consequently potential energy is zero. So that means the energy is wholly and solely kinetic. So the energy is entirely kinetic. So we can say that this Fermi energy is then the maximum value of kinetic energy that an electron can have in a metal. So consequently, जो Fermi level के corresponding एक electron की energy होगी, which will be obviously wholly and solely kinetic, तो उसको हम Fermi energy कहते हैं. और Fermi energy के लिए हमने already एक expression derive की है. This is the expression for Fermi energy, h bar square by 2m into kf square. This kf is called Fermi wave vector, and it is the radius of Fermi sphere. It is the radius of Fermi sphere. तो चूंकि electrons fermions हैं और they will obey Pauli's exclusion principle, and they will obey Fermi Dirac distribution, and the Fermi Dirac distribution is this: f of E is equal to 1 by
exponential function of E minus EF by KT. E is the energy of an electron. E denotes energy of a free electron at some temperature T. This temperature T is here. And EF, obviously, it denotes the Fermi energy. So the Fermi distribution function equals 1 by e raised to power E minus EF by KT plus 1. This is basically probability. This Fermi function gives us probability that an energy state with energy E is occupied by an electron at temperature T. So basically, this Fermi function is a probability, and we very well know that probability जो है उसका जो value है that can range from 0 to 1. So if the value is 0, that means there is no electron in the energy state, surely. And if the probability is 1, that means the electron is definitely in the energy state. So let us check its few values. Let us take energies of electrons less than Fermi energy, and we will keep temperature equal to absolute 0. So obviously, the probability of finding an electron in any energy state should be equal to 1. Because at absolute 0, जितने भी एनर्जी स्टेट्स हैं, जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं जो फर्मी एनर्जी से नीचे हैं या इक्वल टू फर्मी एनर्जी, they are all filled. So the probability of finding an electron in those energy states should be 1. So let us check. इसमें हम E, we will keep it less than EF. So that means जो exponential का function, exponential function का जो power है, this E is less than EF, so it will be negative. So it will be E some negative value in the numerator. Divide denominator KT. K will have some value, Boltzmann constant, but T is being put 0, so it will be 0 in the denominator. So the exponential function will be e raised to power minus, since this is 1 by 0, that will be a raised to power minus infinity, and e raised to power minus infinity is 0. So our distribution function f of e will be equal to 1 divided by, चूंकि exponential function जो है ये हमें 0 मिला, plus 1, so this equals 1 by 1 equals 1, जो कि हमने पहले ही स्पेक्युलेट किया था कि हमें फर्मी फंक्शन का वैल्यू 1 मिलना चाहिए. So at absolute 0, if we talk of any energy less than Fermi energy or equal to Fermi energy, all those energy levels are definitely filled with electrons. That's why we get the probability of finding electron in those states equal to 1. What about temperature greater than absolute 0? So when we will increase temperature above absolute 0, electrons will get excited. So if this was the Fermi energy, this was the Fermi level with energy Fermi energy, और इसके नीचे जो भी ये energy states, they were all filled, and there were energy states above it. Now, if we increase temperature above absolute 0, those electrons will get excited and they will go in higher energy states. So, नीचे जो फर्मी लेवल से जो नीचे एनर्जी स्टेटस हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स दे कैन गो टू फर्मी लेवल like this.
So let us see if the temperature is greater than absolute zero, what is the probability of finding an electron in the Fermi level? So again, we shall go to exponential function. E is equal to EF. So that means numerator में value 0 है, divided by K is some value, T is greater than 0. So denominator में कुछ positive value है. So this is a raised to power 0 equal to 1. So the Fermi function will be equal to 1 divided by exponential function का value हमें 1 मिला, plus another 1 is there. So we are getting 1 by 2, 0.5. So there is 50% probability of finding an electron in the Fermi level when the temperature is above Fermi absolute zero. So the Fermi function equals half. It implies if the temperature is greater than absolute zero, the probability of finding an electron in Fermi level is 50%, 1/2. अच्छा, हम एक और काम करें. If we go to the room temperature range, if we talk of room temperature, then energy will be very, very large as compared to Fermi energy. So which implies E minus EF will be having very, very large value as compared to KT, because जो room temperature है, that will be around 300 Kelvin, but the Boltzmann constant जो है, it has value 1.38 into 10 raised to power minus 23 joule per Kelvin. So this is 10 raised to power minus 23. So this will be having very small value, very, very small value. So E minus EF will be very, very greater as compared to KT. तो यहाँ पे आप देखें, if the this e raised to power E minus EF by KT, numerator has got very, very large value as compared to denominator. So that means this tends to infinity. And when exponential function has got very, very large value, we can neglect this one. So we can get only E raised to power E minus EF divided by KT, only this thing. So we can neglect this one as compared to exponential function. And we can take this exponential function in numerator. So we will get E raised to power minus, iska power minus banega, E minus EF whole divided by KT. So this resembles to Maxwell-Boltzmann distribution function. So at room temperature, the electrons will behave as classical particles. Okay, so this is the graph of Fermi function with energy. So along vertical axis, we plot the Fermi function, and along horizontal axis, we plot energy of the electron. And this graph, this square graph, is for T is equal to absolute zero. This graph is for absolute zero. अच्छा, उसके बाद जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इज T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3. तो 0 केल्विन के ज्यादा नजदीक T1 होगा, तो हम T1 की बात करेंगे. तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फर्मी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब upper energy status में जाएंगे. So the energy will increase. You can see now these energy states are also occupied. तो consequently ये यहाँ से आएंगे.
तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टेटस थी वो खाली हो जाएंगी. यू कैन सी नाउ दोज एनर्जी स्टेटस आर वैकेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स अब अपर एनर्जी स्टेटस में चले गए हैं. और जितना जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मोर एंड मोर अपर एनर्जी स्टेटस विल बी फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन. सो इन केस ऑफ T2, यहां तक जो एनर्जी स्टेटस है वो सारी फील्ड है. एंड इन केस ऑफ T3, यहां तक जो एनर्जी स्टेटस है दे आर ऑल फील्ड. तो ये एनर्जी स्टेटस अगर फील्ड है तो ये एनर्जी स्टेटस एम्प्टी हो रही है. तो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ ई चेंजेस विद टेम्परेचर. जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो 0.5 पे के नीचे जो ग्राफ है वो उतना राइट को चला जाएगा, और 0.5 से ऊपर जो है उतना ग्राफ लेफ्ट को चला जाएगा. दिस इज कॉल्ड सिमियरिंग ऑफ द ग्राफ. फिजिकली इसका मतलब ये है कि when we increase temperature greater than absolute zero, तो फर्मी लेवल से नीचे जो एनर्जी स्टेटस है वो खाली होती है, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स जंप टू हायर एनर्जी स्टेट्स. ओके, सो फर्मी एनर्जी के लिए हमें ये एक्सप्रेशन मिलती है. ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की है. h bar square by 2m 3 pi square n by v whole raised to power 2 by 3, and this n is the total number of free electrons in the metal, and this v is volume of the metal sample. और इनका जब हम रेशो लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, we get this small m, जिसे हम कहते हैं free electron density, the number of free electrons per unit volume. अच्छा, इसमें कुछ एक फिजिकल कांस्टेंट है h bar. H bar is basically reduced Planck's constant, and it is given by 2 pi. This h bar is called reduced Planck's constant. तो इसका हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. We can substitute the value of m. M is the mass of electron. फिलहाल आप याद रखें m is mass, but it is basically, इसको हम effective mass कहते हैं. यहाँ पर जो ये m है हमने अभी तक लिया है, it is mass of a free electron. तो उसका वैल्यू तो हमें पता है, that is 9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम. लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एक मेटल में आ जाता है तो उसका मास थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो that mass is called effective mass, और उसको हम m स्टार से डिनोट करते हैं. We will talk about it in our next topic, which is the Cronin-Penny model. फिलहाल आप याद रखें, this m is mass of electron. इसी तरह 2 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो we are left only with this n raised to power 2 by 3. बाकी जो हैं उनके वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, and when we substitute we get the value for Fermi energy as 3.65 into 10 raised to power minus 19, and then the only variable left is n with power 2 by 3, and the unit of energy here is electron volt. E small, V capital. Electron volt is the unit of energy. It is the energy possessed by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. And otherwise, the SI unit of energy is joule. The SI unit of energy is joule.
but joule is a very big unit so far as molecules are concerned, atoms are concerned, nuclei are concerned, electrons are concerned. So joule is a very big unit. So suitable unit for microscopic phenomena is electron volt. And the relation between the two units is 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. So see, अगर हम एक जूल के 10 रेज टू पावर 19 हिस्से करें तब कहीं जाके हमें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है. सो 1 जूल इज वेरी वेरी लार्ज यूनिट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर हमें किसी भी मेटल का की फर्मी एनर्जी का वैल्यू देखना हो तो वी हैव टू ओनली सब्स्टिट्यूट द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड सिंस दिस डिपेंड्स ऑन द मेटल, different metals have different free electron densities, so consequently we will get different values for Fermi energy. अभी हम एक प्रॉब्लम करेंगे, we will take the example of zinc. तो हम उसमें देखेंगे कि जिंक के लिए हमें फर्मी एनर्जी का क्या वैल्यू मिलेगा. बट I will recommend you that you use this equation for other metals also, like copper, like iron, like silver. तो आप इस इक्वेशन में उनके फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपको उन मेटल्स का के फर्मी एनर्जी का वैल्यू मिलेगा. लेकिन उससे पहले हम एक और चीज भी देखना चाहेंगे, एंड दैट इज द एवरेज इलेक्ट्रॉन एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो. देखें, जो मेटल है उसमें हर एनर्जी लेवल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं. तो जितना जितना हम ऊपर जाएंगे उतना उतना इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, लाइक दिस. एंड एट एब्सोल्यूट जीरो द टॉप मोस्ट फिल्ड लेवल जो है दैट इज द फर्मी लेवल विद एनर्जी EF. तो यू कैन सी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी एनर्जी सबसे मिनिमम है, और EF जो है दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी, एंड द लोवेस्ट एनर्जी दैट इज द मिनिमम एनर्जी. सो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी नहीं है. एट एब्सोल्यूट जीरो दिस विल बी फिल्ड, और उससे आगे उससे ऊपर जो भी एनर्जी लेवल्स हैं दे विल बी ऑल एम्प्टी. तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज एनर्जी देखना चाहेंगे एट एब्सोल्यूट जीरो. तो व्हाट वी विल डू, we will sum energies of all those electrons. So we will see what is the total energy of all the electrons in metal at 0 Kelvin. और इस टोटल एनर्जी को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Obviously they are free electrons. So this will give me E naught. Let us denote the total energy of all the free electrons at absolute zero with E naught, and divide the total number of free electrons in the metal by En. So this gives me the average energy of an electron at absolute zero. तो इसके ऊपर हम बार लगाएंगे. So this will give me the average electron energy at absolute zero. तो इसके लिए भी हम एक expression derive करेंगे. So E naught bar is equal to total energy of all the free electrons at absolute zero, और इसको हम divide करेंगे what is the total number of free electrons. तो n तो खैर छोड़े, सबसे पहले हम इस E naught के लिए एक्सप्रेशन देखेंगे, यानी व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगर मुझे देखना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a small energy interval dE, so that will be given by NEDE. This is the number of free electrons
which are in the energy range from E to E plus DE. अगर ये क्लासिकल पार्टिकल्स होते तो this would have been equal to the density of energy states into energy interval. लेकिन चूंकि ये फर्मियंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। एक तो हमें ये भी देखना है कि what is the number of available energy states. Now the number of available energy states is this much. GE, this is the number of energy states per unit energy interval. तो इसको हमने energy interval multiply किया, तो this gives me the number of available states in the energy range E to E plus DE, right? मगर इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कि क्या सच में ये एनर्जी स्टेट्स ऑक्यूपाई होते हैं विद इलेक्ट्रॉन्स. So that is why we have to multiply it with the probability of finding electrons in those energy states. तो G of E into DE इसको हमने multiply करना है the Fermi function. So this is the number of electrons. So this is the number of electrons in the energy range E to DE. तो इसको हम multiply करेंगे हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर ऑल द वैल्यूज ऑफ एनर्जी, एंड स्टार्टिंग एनर्जी 0 रखेंगे और मैक्सिमम एनर्जी फर्मी एनर्जी होगी. So this will give me the total energy of all the free electrons at absolute zero. तो एक तो इंटीग्रल में रहेगा 0 to EF, और है E, N of E DE की जगह हम लिखेंगे G of E DE, और है फर्मी फंक्शन F of E. लेकिन for all the values of energy ranging from 0 to EF, obviously the probability is 1. The finding of electron in those energy states is exactly 1. क्योंकि all at absolute zero, all the energy levels up to the Fermi level, they are filled. तो यहाँ पे F of E हमें 1 मिलेगा. तो that means कि हमें इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ ये रहेगा, एक तो E into density of states into DE, और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए हमने एक्सप्रेशन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिराइव करके रखी है, तो हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पे जो फर्मी फंक्शन है इसका वैल्यू 1 है, ऑल द एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड. तो यहाँ इसमें हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको अब इंटीग्रेट करेंगे. तो यहाँ पे जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो है एनर्जी. तो दिस V डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर 2m by h bar square whole raised to power 3/2, it's a constant, so it will get out of the integration. यहाँ पे e का पावर है 1 और यहाँ पे e का पावर है 1/2, तो इन दोनों को मिला के e का पावर जो है वो 3/2 बनेगा. So that is our next step. So we have to integrate this. तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, e का पावर है 3/2, तो इसका एक पावर ऐड होगा, सो 3/2 +1, एंड यही पावर डिवाइड भी होगा, सो 3/2 +1, एंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर 0 to E. So this will be e raised to power 5/2 divided by 5/2, and the limits of integration are 0 to F. So obviously
जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ई का वैल्यू हम यहाँ ई एफ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी विल गेट ई एफ raised to power 5 by 2 divided by 5 by 2. So that is the value of this integral. तो वो हम नेक्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल जो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। अब इस 5 by 2 को जो डिनोमिनेटर में है, अगर इसको हम न्यूमरेटर में लाएं तो इट विल बिकम 2 by f and 2 will get cancelled with this 2. So we are getting 1 by f times e raised to ef Fermi energy raised to power 5 by 2. So this is इसको हम ऐसा करेंगे कि इसको हम 3 मल्टीप्लाई भी यहाँ करेंगे, तो फिर वो 3 यहाँ पे हमने डिवाइड भी करना होगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस एक्सप्रेशन ये हमें प्रीवियस लेक्चर में मिला था इक्वल टू n, द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दिस एक्सप्रेशन, और इसमें हम जो ये EF है, इस EF को हम लिखेंगे EF into EF raised to power 3 by 2। तो EF raised to power 3 by 2 जो है वो हम यहाँ ब्रैकेटेड टर्म के अंदर ले जाएंगे, बिकॉज हमें प्रीवियस लेक्चर में ये n के बराबर मिला है। वी हैव गॉट दिस इक्वल टू n, द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स we are getting E naught equal to 3 by 5 into this whole thing is n into EF। अच्छा, अगर हम दोनों साइड्स पे n से डिवाइड करें तो E naught divided by n is equal to 3 by 5 times the Fermi energy, and this we have defined as the average energy of an electron at absolute zero. So this is the expression for average electron energy at absolute zero. तो अगर हमें Fermi energy पता है, we have to multiply that Fermi energy with 3 by 5, तो हमें मिलेगा what is the average electron energy at absolute zero. Right, so we are done. तो अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे फॉर जिंक। सबसे पहले हम उसकी फर्मी एनर्जी के लिए वैल्यू इवॉल्वेट करेंगे, फिर उस फर्मी एनर्जी को 3 by 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट द एवरेज इलेक्ट्रॉन एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो। सो लेट अस डू दैट। दिस इज द प्रॉब्लम। द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर जिंक इज दिस। It has got 1.313 into 10 raised to power 29 free electrons per cubic meter, and we have to determine two things. One is Fermi energy, तो एक तो हमने Fermi energy का वैल्यू इवॉल्वेट करना है, and mean electron energy at 0 Kelvin, यानी कि what is the value of E naught bar। तो ये दो हमने इसके लिए देखना है। तो फर्मी एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है 3.65 into 10 raised to power minus 19 n raised to power 2 by 3. So let us substitute the value. So this will be equal to 3.65 into 10 raised to power minus 19 into n, which is 1.313 into 10 raised to power 29 whole raised to power 2 by 3, and the unit is electron volt। तो ये जो नंबर है इसका पावर हम अलग रखेंगे, और जो पावर ऑफ 10 है उसका ये पावर अलग रखेंगे। सो दिस विल बी 3.65 into 1.313 होल रेज टू पावर 2 by 3। तो ये हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनटू 10 रेज टू पावर minus 19 into
10 raised to power 29 whole raised to power 2/3। यहाँ पे हम एक ये यूज करेंगे कि सिंस वी हैव टू डिवाइड द पावर ऑफ 10, यानी 29 इसको हमने डिवाइड करना है 3 से। 29 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो वी विल मेक इट 27। सो 3.65 into 1.313 whole raised to power 2/3 into 10 raised to power -19। तो इसको हम लिखेंगे 10 raised to power 2 into 10 raised to power 27। तो इसका भी पावर आएगा 2/3 और इसका भी पावर आएगा 2/3। तो इससे हमारा काम आसान होगा कि दिस इज 3 9s or 27 and this 9 into 2 will become 18। So we get 3.65 into 1.313 whole raised to power 2/3 into 10 raised to power -19 into this is 10 raised to power 2 into 2 is 4, so it is 10 raised to power 4/3 or into this is 10 raised to power 18। So this 10 raised to power 18 and this 10 raised to power -19 will be only 10 raised to power -1। So this will be 3.65 into 1.313 whole raised to power 2/3 into this will be 10 raised to power -1 and इसको हम लिख सकते हैं that this is 10 raised to power 4 means 10,000 का क्यूब रूट। तो इनको जब आप सारे वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर जिंक यू विल गेट 9.43 electron volt। So the Fermi energy for zinc is 9.43 electron volt, or the average energy of electrons at absolute zero, this is 3/5 into the Fermi energy। So this is 3/5 into 9.43 electron volt, and when you will calculate this, so you will get 5.66 electron volt। तो मैंने तो एक एग्जांपल ली है जिंक की, यू कैन ट्राई फॉर अदर मेटल्स आल्सो, यू हैव टू ओनली सब्स्टिट्यूट द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हियर। अच्छा, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन फर्मी एनर्जी? फर्मी एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द मेटल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलबत्ता टेम्परेचर जो है, फर्मी लेवल डिक्रीजेस स्लाइटली। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, द फर्मी लेवल डिक्रीजेस स्लाइटली। इसका मैथमेटिकल प्रूफ हम आगे देखेंगे, बट दैट वेरिएशन विद टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। सो हम कह सकते हैं कि एसेंशियली फर्मी लेवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। Average electron energy जो है that increases slightly with temperature and that variation is not too much। अच्छा, Fermi temperature क्या है? एक साइड हम एक इक्वेशन बनाएंगे, तो एक साइड में हम इलेक्ट्रॉन की फर्मी एनर्जी लिखेंगे एंड दूसरे साइड में एनर्जी के लिए हम क्लासिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। सिंस बोल्ट्जमैन इनटू टेम्परेचर गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। तो एक मेटल की फर्मी एनर्जी, we have to put that equal to Boltzmann constant into temperature का कौन सा वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, so that Boltzmann constant into temperature हमें Fermi energy के बराबर मिले। That temperature is called Fermi temperature।
So the Fermi temperature is temperature at which the average thermal energy of free electron in a solid becomes equal to Fermi energy at 0 Kelvin. So this is the expression. So we have to put Fermi energy equal to Boltzmann constant into Fermi temperature. तो यहाँ से हमें Fermi temperature के लिए expression मिलती है. This is given by the ratio of Fermi energy and we have to divide it with Boltzmann constant. तो obviously इसका जो value है वो 10 raised to power 4 Kelvin में मिलता है. It is tens of thousands of degrees. तो इसी तरह हम फर्मी वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं. जो फर्मी एनर्जी है, since this is wholly and solely kinetic, तो kinetic energy of an electron can be written as 1/2 mv square. Since this Fermi energy is the maximum value of energy, तो हम यहाँ पे जो ये velocity है इसका भी maximum value लिखेंगे. And that maximum value of velocity is called Fermi velocity. So the velocity of electrons which occupy the Fermi level is called the Fermi velocity, and it is obviously the maximum value of velocity that free electrons can have in a metal. तो अगर हम इसके लिए भी एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो 2 will get multiplied to Fermi energy and m will get divided. तो we will get twice EF by m, and then चूंकि Fermi velocity पे square है, we will take square root. So this is the expression for Fermi velocity.